Namaskar sabhi ko in my second video on Sentential Logic. So in this video we are going to talk about ambiguity or arguments. So let's start with a small recap. पिछले वीडियो में हमने देखा about classical logics. So we know that there are three types of classical logics. हमारे पास है prop logic. Henceforth we are going to address it as truth functional logic, जो इसका formal name है TFL. दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जो अभी तक हमने चालू नहीं किया. इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिफायर लॉजिक एंड और इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट लॉजिक. एंड फाइनली द थर्ड वन इज मोडल लॉजिक, which was recently formulated by Kripke, जैसा मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया. These are all classical logics. If you step outside the domain of classical logic, you have entered non-classical logic. So basically अगर आप कायदे कानूनों को डिनाई कर दोगे classical logic के, then you have entered non-classical systems. Alright, so that's what we learned in the last video. उसके बाद हमने ये भी देखा कि sentences को symbolize कैसे करना है. What is meant by a sentence? Sentence is basically any statement that can be true or false. इस वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट्स को सिंबलाइज करना जानेंगे एंड विल टॉक अबाउट सम एम्बिग्विटीज इन द सेंटेंसेस. सो व्हाट आर दीज एम्बिग्विटीज? बेसिकली किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में, कोई भी नेचुरल लैंग्वेज लो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज लो जो नेचुरल लैंग्वेज है, इट्स गोइंग टू हैव टू एम्बिग्विटीज. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेक्सिकल. और ये एम्बिग्विटी इसके वजह से आती है कि सेंटेंसेस के अंदर जो शब्द है उनके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं. एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. सो द एम्बिग्विटी राइजिंग फ्रॉम दैट्स कॉल्ड लेक्सिकल एम्बिग्विटी. दूसरी एम्बिग्विटी जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी. सो दिस राइजेस फ्रॉम द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, शायद सिंटैक्स से, या फिर देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी कॉल्ड एज स्कोप एम्बिग्विटी विच इज रिलेटेड टू द कनेक्टिव्स. सो लेट्स ट्राई टू सी देम स्टेप बाय स्टेप. पहले देखते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी की तरफ. ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस सेंटेंस. I'm going to the bank beside the bank. Now the problem here is, ये जो शब्द है इसके दो अर्थ हो सकते हैं. The first one could mean a financial institution or it could be talking about a river bank. So ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें ये पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा इंटरप्रिटेशन मानना है. Maybe in both the cases I'm talking about the financial institution, or maybe in both the cases I'm talking about the river bank, or maybe in the first case I'm talking about the financial institution and in the second case I'm talking about the river bank, and vice versa. So you can clearly see that there could be four interpretations of the same sentence, keval because one word in that sentence has multiple meanings. So it creates an ambiguity, and this is called lexical ambiguity. और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी. सो बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जैसा मैंने कहा, ग्रामर, सिंटैक्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज़ अ वेरी फेमस एग्जांपल टेकन बाय नोआम चॉम्स्की. फ्लाइंग एयरप्लेन्स कैन बी डेंजरस. सो क्लियरली यू कैन सी दैट इस सेंटेंस के भी दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. एंड इवन दो ऑल द वर्ड्स इन दिस सेंटेंस हैव ओनली वन मीनिंग, फिर भी इसके दो इंटरप्रिटेशन है. सो इट कुड मीन एयरप्लेन्स जो उड़ रहे हैं वो डेंजरस होते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन. और यू कुड से दैट द एक्ट ऑफ फ्लाइंग द एयरप्लेन्स इज डेंजरस. सो एयरप्लेन चलाना ये डेंजरस है. फ्लाइंग एयरप्लेन इज डेंजरस, राइट? सो दैट्स बेसिकली द सेकंड इंटरप्रिटेशन. सो एक ही सेंटेंस के दो इंटरप्रिटेशन है, इवन दो ऑल द वर्ड्स इन द सेंटेंस हैव जस्ट वन मीनिंग. सो दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी. There is a special kind of structural ambiguity which is directly relevant to logic, and that's called scope ambiguity. So इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. So what is scope ambiguity? So let's take an example. ये example है. It says Avengers Endgame, जो movie है. It's not long and boring. अभी आप ध्यान से पढ़ोगे, इसके भी दो interpretation है. Maybe you're talking about this one where it says Avengers Endgame is not long and boring, right? So maybe the not is applied to both the things. That is the first interpretation. Or maybe it's talking about the second interpretation where it says Avengers Endgame is both not long and boring. So now we have no idea which interpretation is to be considered. And this is exactly where logic helps us, because formally हम इसको represent कर सकते हैं. So let's try to symbolize it first. यहाँ पर दो एटॉमिक सेंटेंसेस है. Avengers Endgame is long,
That's the first atomic sentence. And the second is same, Avengers Endgame is boring. That's the second atomic sentence. Okay, so let's try to symbolize the first one. It says Avengers Endgame is not both long and boring. So यहाँ पर conjunction की बात हो रही है, if you remember the connectives from the last video. So it's both long and boring. और इसके पहले है not. So we have to negate the whole thing. So this would be the symbolization of the first sentence. Now let's symbolize the second sentence. It says not long and boring. So basically, not long and boring. So अभी आपको फर्क clearly formally भी दिखाई देगा. In the first case, this operator is applied to the whole conjunction. So इस operators का scope जो है, that is for the entire conjunction. Whereas in the second case, the not operator is only applied to the first conjunct. और इस पूरे sentence का main operator है and, right? So पहले केस में not का scope ज़्यादा है, दूसरे केस में and का scope ज़्यादा है. अभी नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में ये दोनों सेंटेंसेस के इंटरप्रिटेशन में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट व्हेन यू रिप्रेजेंट देम सिंबॉलिकली, दैट्स द पावर ऑफ लॉजिक. ये कंफ्यूजन नहीं होगा. सो दैट्स वेयर लॉजिक कैन हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ एनी स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी. ओके, सो हमने सेंटेंसेस के बारे में जान लिया. देन वी टॉक्ड अबाउट एम्बिग्विटी, वी नो अबाउट कनेक्टिव्स. ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? वेल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज मेंट बाय एन आर्ग्यूमेंट. सो आर्ग्यूमेंट का मतलब नॉर्मल लेमन टर्म्स में होता है लड़ाई झगड़ा वगैरह, एंड दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट द वर्ड. बट इन फिलोसफी आर्ग्यूमेंट का वो मतलब नहीं होता. इन सिंपल वर्ड्स, इन फिलोसफी आर्ग्यूमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस in which one of them is the conclusion, and so the remaining would be the premises. So that's in simple words. इसकी एक formal definition भी है कि basically argument is a set of at least two well-formed formulas such that at least one of them is the conclusion and the other is the premise. So that's a more formal definition of the argument. और इसमें एक शब्द भी है well-formed formulas, जो हम बाद में सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है. अभी के लिए यह definition सही है कि it is a collection of sentences in which one of them is the conclusion and the remainder are premises. अभी ये जो conclusion होता है, that's usually indicated by words like hence, consequently, therefore, etc. etc. So इन शब्दों के बाद जो sentence आता है, that is an argument. That is a conclusion of the argument. So now let's take an example about symbolizing arguments. So let's take this example. This is actually a very famous argument which was put forward by René Descartes. René Descartes analytic geometry के founder है. Every time you hear the word Cartesian, it comes from Descartes. And this argument is the famous mind-body dualism, also called Cartesian duality. और ये इसका argument है. Let's try to symbolize this argument. तो ये कहता है कि body is divisible. If so, and if the mind and body are the same, then the mind is divisible. But the mind is utterly indivisible. Hence, mind and body are not the same. So let's try to set up our symbolization key. Atomic sentences पहले देखते हैं. We have the first atomic sentence, which says the body is divisible. Okay. उसके बाद का जो atomic sentence है, it says mind and body are the same. Let's call it S. That's the second atomic sentence. This is the first one. The third one would be mind is divisible. Okay, right? So these are the three atomic sentences. Now let's try to symbolize the argument premise by premise. So the first premise is that the body is divisible, and that is, as per our symbolization key, that's denoted by P. So it's just P. The second premise says, if so, and the mind and body are the same, then the mind is divisible. So आपको समझेगा कि this is basically a conditional. It talks about if then, अगर ये होगा तो वो होगा, and then there is an and in between, which we have already adjusted in our symbolization key.
राइट। बट यहाँ इफ सो का मतलब होता है कि अगर पहली बात सच है एंड माइंड एंड बॉडी आर द सेम, देन द माइंड इज डिविजिबल, राइट। सो ये सेकेंड सेंटेंस का सिंबलाइजेशन कंडीशनल में होगा। ये बेसिकली होगा कि इफ सो मतलब क्या, इफ द बॉडी इज डिविजिबल एंड mind and body are the same, then the mind is divisible. So that's basically premise number 2. Premise number 3. It says the mind is utterly indivisible. So basically, this is negating the sentence above. This is negating the consequent above. So it is not the case that mind is utterly indivisible. And so what is the conclusion which follows? Hence, it is not the case that mind and body are the same. So this is basically the symbolization key of Descartes' argument, Cartesian duality. Now one of the most important things is, ये argument अच्छा है या बुरा है, right? So that comes from the very idea of validity and soundness. So let's talk about validity. What is a valid argument? So validity का मतलब ये होता है कि an argument is valid if and only if the conclusion is a consequence of the premises. Consequence of the premises. So अब इस consequence शब्द का मतलब क्या होता है in logic? It basically means consider a sentence A. ये sentence किसी और sentence या फिर multiple sentences का consequence होगा if and only if there is no case where B1, B2, ... ये सब sentences है, ये सब सच है और A सच नहीं है. So basically if A is a consequence of multiple sentences, अगर ये sentences सच है तो ये sentence भी सच ही होगा, which follows from these sentences. So that is what we mean by a consequence. ऐसा कोई case नहीं होता जहाँ पर set of sentences सच है और इनमें से जो follow होता है वो झूठ है, right? So that is what we mean by a consequence. So if the conclusion is a consequence of the premises, then what we say is that formally we would say that the sentence A follows from B. Or in other words, we say that ye sentences entail a particular sentence. So when we apply it to arguments, it basically means that the premises entail the conclusion, tab jaake argument valid argument hoga. Or to state it another way, in a valid argument, if the conclusion follows from the premises, or if the premises entail the conclusion, then the argument is valid. So that's basically the idea of validity. So अब कुछ examples लेते हैं. Let's take an example of valid argument. Now remember, an argument is valid if there is no case where the premises are true and the conclusion is not true. That is what is meant by an invalid argument. अगर ये हुआ तो ये argument invalid है. So in a valid argument, the conclusion follows from the premises, which means if the premises are true, the conclusion must be true in a valid argument. Okay, so example लेते हैं. Either Priya is an ophthalmologist or a mathematician. Priya is not a mathematician. Therefore, Priya is an eye doctor. अभी आप इस आर्ग्यूमेंट को देखोगे, इसका फॉर्म ये है कि प्रिया एक तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है या फिर वो मैथमेटिशियन है. अगर वो मैथमेटिशियन नहीं होगी, देन इट फॉलोज दैट प्रिया इज़ एन आई डॉक्टर. सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी केस जहाँ पर ये प्रेमिस सच है, इसके बाद का प्रेमिस सच है, फिर भी कंक्लूजन झूठ है. ये नहीं हो सकता. इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हियर आई हैव सेट द वर्ड ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, बट हियर आई एम यूजिंग अनदर वर्ड which means an eye doctor. Now the thing is, ophthalmologist and eye doctor are the same thing. They are one and the same thing in the language that you're talking about. So in this case, the argument would be valid, but it's not formally valid. क्योंकि अगर आप इसको symbolize करोगे, then this sentence will have a different symbolization key than this sentence. ऐसा इसलिए है कि logic doesn't understand the equivalence between the meaning of the words. ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक के डोमेन के बाहर की बात है अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. सो लॉजिक इज गोना बी डम्ब अबाउट दिस. लॉजिक विल से ये पहला सेंटेंस अलग है और आखिरी सेंटेंस भी अलग है. सो सिंबलाइजेशन की में ये फॉर्मली इस आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड बता देगा, बट इवन देन एज पर दिस डेफिनेशन दिस आर्ग्यूमेंट इज कंसेप्चुअली वैलिड. ऐसा नहीं होगा कि दोनों प्रेमिसेस सच है और कंक्लूजन झूठ है. So this is the difference between formal validity and valid arguments, right? This is conceptually valid but formally invalid.
हम आगे देखेंगे कि अगर मैं यही आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ और कंक्लूजन में सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तब ये आर्ग्यूमेंट फॉर्मली वैलिड भी बनेगा. So now let's take an example of invalid argument. Argument is like, if the butler did it, then the maid did not do it. The maid did not do it, therefore the butler did it. अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को समझोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है, बिकॉज लेट्स से ये प्रेमिस सच है कि इफ द बटलर डिड इट देन द मेड डिड नॉट डू इट. ठीक है, ये प्रेमिस सच है. और दूसरा प्रेमिस है द मेड डिड नॉट डू इट. ठीक है, ये भी सच है. बट क्या इससे कंक्लूजन रियली फॉलो होता है? कैन देयर बी एनी केस जहां पर प्रेमिसेस सच है पर कंक्लूजन झूठ है? हाँ, बिल्कुल है. जस्ट बिकॉज द मेड डिड नॉट डू इट डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटेल कि द बटलर डिड इट. मे बी समवन एल्स डिड इट. So the conclusion here is not a direct consequence of the premises. तो इसलिए ये argument invalid है, because there is a case जहाँ पर premises सच हो जाएंगे but फिर भी conclusion झूठ हो सकता है. So this is an example of invalid argument जहाँ पर conclusion is not a consequence of the premises. So इससे हमें पता चलता है कि what exactly is a good argument, right? अभी तक हमने वो define नहीं किया. So basically in logic, a good argument is a sound argument. And what is a sound argument? A sound argument is any argument that is valid, validity, जो हमने अभी बात की, formal validity, और उसके premises भी सच है. So basically any argument जहाँ पर conclusion follows from the premises, so there is no counter example, there is no case where the premises are true and the conclusion would be false, right? So it's a valid argument, formally valid भी हो सकता है, and the premises are true. So in this case, if the argument is valid and the premises are true, then the conclusion must be true. And this is what we mean by a sound argument. So in a way, we are trying to say that all sound arguments are by default valid arguments, क्योंकि validity is a necessary condition for sound arguments. और दूसरी बात यह है कि all the invalid arguments would be by default unsound. राइट, सो कोई भी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट साउंड हो ही नहीं सकता, बिकॉज वैलिडिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन, वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ साउंड आर्ग्यूमेंट. सो दीज टू आर द इन्फरेंसेस दैट वी कैन ड्रॉ. सो इसलिए मैंने यहाँ कहा है कि नॉट ऑल वैलिड आर्ग्यूमेंट्स आर साउंड. जस्ट बिकॉज एन आर्ग्यूमेंट इज फॉर्मली वैलिड, उसका लॉजिकल फॉर्म अच्छा है, डज नॉट मेक इट साउंड. टेक दिस एग्जाम्पल. Oranges are either fruit or musical instruments. Oranges are not fruit, therefore they're musical instruments. अगर आप इसको symbolize करोगे तो इसका फॉर्म परफेक्ट है. इट बेसिकली सेज either or, एंड इसके बाद नॉट है. सो ये सब ऑपरेटर्स है, और यहाँ पर भी एटॉमिक सेंटेंसेस हम लिख देते हैं. ये कहता है ऑरेंजेस आर फ्रूट, लेट्स कॉल इट एफ. और दूसरा सेंटेंस होगा ऑरेंजेस आर म्यूजिकल instruments. Okay, so now when you symbolize this, you can symbolize it as follows. Either F, which is oranges are fruit, or M. That's premise number one. दूसरा premise ये है कि oranges are not fruit, so it's negating. It is not the case that F. Therefore, oranges are musical instruments. So this argument is actually formally valid, but फिर भी it is unsound because clearly this premise is false, right? So just because an argument is formally valid doesn't mean it is also sound. Premises also need to be true. So ये दूसरी necessary condition है कि premises भी सच होने चाहिए और argument formally valid भी होना चाहिए. That is what leads to a sound argument. Let's say you have a union. Let's say this is the universal set of all the possible arguments. In that case, we'll have valid arguments inside the bigger circle, and over here are all the invalid arguments. ठीक है, इस सर्कल के अंदर जो है सारे बड़े सर्कल के अंदर, those are all valid arguments. और इन वैलिड आर्ग्यूमेंट्स का भी एक सबसेट होगा which we consider as sound arguments. So इसके अंदर सब sound arguments है. So इससे भी हमें पता चल जाएगा कि all sound arguments are by default valid. But that does not mean that all valid arguments are by default sound. क्योंकि इधर भी कुछ argument है जो formally valid है
बट उनके प्रेमिसेस झूठ है, right? So soundness is a subset of validity. Validity is a necessary condition for soundness, one of the necessary condition. So now let's come to the last thing, which is formal validity. हमने अभी देखा. Let's take the same argument which we took before. Here it says either Priya is an ophthalmologist or she is a botanist. Priya is not a botanist, hence she is an eye doctor. अभी ये argument conceptually valid होगा because ophthalmologist means the same as the eye doctor. And if you focus on the argument, there is no case where the premises are true and the conclusion is false. So इसलिए ये argument conceptually valid है, but ये formally invalid है because logic को ये समझ नहीं आता कि ophthalmologist और eye doctor mean the same thing. Logic is dumb. Logic doesn't understand the meaning of the words. It doesn't care about the meaning of the words. It only cares about the syntax. अभी दूसरा argument ले लेते हैं, which is just the same thing. Either Priya is an ophthalmologist or she is a botanist. Priya is not a botanist. Hence, she is an ophthalmologist. So in this case, अगर आप इसको formalize करोगे, it basically means Priya is an ophthalmologist or she is a botanist. This is premise number 1. Premise number 2 is that it is not the case that she is a botanist. Therefore, she is an ophthalmologist. सो क्लियरली अब इसको फॉर्मली रिप्रेजेंट करोगे तब भी दिखाई पड़ता है कि ये वैलिड है आर्ग्यूमेंट. कंसेप्चुअली वैलिड तो है ही, बट अभी ये फॉर्मली वैलिड भी बन चुका है. वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट सेम टर्म इन द कंक्लूजन. सो नाउ लॉजिक कैन ट्रैक इट बिकॉज अभी इसको सेम सेंटेंस लेटर असाइन होगा. What we used for the first sentence, we did that in the conclusion, right? In the first case, logic उसको दो अलग sentence बनाएगा because the word eye doctor is something different for logic. Logic doesn't know that eye doctor and ophthalmologist are the same things. So this is basically the entire concept of formal validity. कि कोई भी sentence conceptually valid हो सकता है, but फिर भी formally invalid हो सकता है. Formal validity के लिए you need to preserve the syntax. You need to preserve exactly the words that you are using in the conclusion if you want the argument to be formally valid. Okay, so ये वीडियो यही ख़त्म हो जाता है. In the next video we will talk about truth tables. कि अभी हमने जो arguments लिखे, symbolize किए, how can we prove the validity of the arguments? So we arrive at the concept of proofs. और proof करने के दो प्रकार हैं. We have truth tables or we have natural deduction. और अगले 2-3 वीडियोज़ में हम वो जानेंगे about sentential logic. Then we will move on to first order logic.